was, I think we started with job design in the last session. Okay, I'll just share the screen and 1 minute. Just help me know if the screen is visible or not. Yes, It is, ma'am. ma'am. Okay. In the last session, students, we started with job design and job redesigning. Before I, dwell into this concept, very quickly, we will have a small recap of what we have done so far in recruitment. Just a moment, I'm sharing the whiteboard. You tell me what is the meaning of recruitment. Come on. Process of attracting the candidates. Okay, process of attracting the candidates, and then not just attracting. Okay, you have to make sure that you encourage them to apply for jobs. Okay, in your organization, that is called as recruitment. Okay, so what you are doing, students, you are attracting the candidates and encouraging them to apply for the job. We have seen the meaning of recruitment. Then we have seen objectives also. There are so many objectives of recruitment. After that, we have also seen an answer which is about relevance of recruitment. Yes or no? है ना, relevance and Yes, ma'am. importance. Yes, ये आंसर ma'am. भी हो गया है, right? And then in the last session, we started with something called as job design, and we also discussed something called as job redesign. So what is job design, students? What do you mean by job design? Okay. It means all the duties and responsibilities, okay, that are attached to a particular job or a role is called as job design. Okay, I'll just mention here all the duties and responsibilities, okay, that are attached to a particular job, okay, to perform that task is called as job design. For example, if I am a sales executive, okay, my work is to fetch the data, work on that data, call up the customers, generate leads, do the sales, and by the end of the day, I have to also report to my team leader how much sales I have done. So ये सारे duties and responsibilities is what my job design. But students, what do you mean by job redesign? Don't you think it is going to be very monotonous, guys, if I keep doing the same thing every day? Every day I wake up, I go to the office, I log into my computer, I fetch the data, I call my customers, I generate leads, I prepare reports. Daily agar मैं यही करूंगी, don't you think my creativity will get affected, guys? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think there are many students in the session. I expect responses from all of you. Okay, so if I'm doing the same work again and again, okay, it is going to definitely generate monotony and boredom, and at a point, okay, where it is saturated, I might just lose all my creativity. Okay. So what is job redesigning? I'm bringing some creative element, okay, in my normal working style. Okay, I'm doing the same work, but maybe in a different manner. Okay, same work, but it may be in a different manner. फॉर एग्जाम्पल, काम तो मेरा सेल्स ही है, मुझे लाना कस्टमर्स ही है, मुझे सेल्स ही जनरेट करना है, कंपनी को प्रॉफिट लाना है, वर्क इज सेम, ओके, बट अब मैं टेलीफोनिक सेल्स नहीं कर रही हूँ. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्रोबेबली विजिटिंग कॉलेज प्रीमाइसेस एंड वहां पे कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज करके, एंड देन आई एम प्रमोटिंग माय प्रोडक्ट्स व्हिच इज गेटिंग मी सेल्स. Or I am going to malls, shopping malls, and I'm conducting some games and some interesting this thing, so automatically there also I'm getting sales. I am eventually at the end of the day doing sales only, but my method of working is changed. Okay, my earlier method was pick up the telephone, call the customers. In this method, I am going to the customer, meeting the customer face to face,
and then I'm generating sales. Okay. Now this sounds to be a different way of working than my previous style of working. Okay. Students, remember one thing. Job redesigning means you are altering, you're doing alteration in your working pattern or your working style, all with ethical standards. Okay. However, your focus on your outcome should not change. Okay. वहां पे जाके सिर्फ पब्लिसिटी करना है, सेल्स नहीं करना है. आप सिर्फ मॉल्स में और कॉलेजेस में जाके सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे हो, उससे आपको सेल्स नहीं मिल रहा है, तो डजंट मेक सेंस. करेक्ट ना? You have to eventually get the sales. Your Yes, ma'am. outcome, your results should not change. I hope till here there is no difficulty, guys. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No और difficulty. आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. It is just a recap of what we have done so far in the last 2 weeks. Okay, we've understood the meaning of recruitment, its objectives, its relevance. We have seen so many concepts: internal recruitment, external recruitment, right? And then we started with job design. Okay, so what is job design? All the duties and responsibilities associated in my, so that I complete a particular task, is called as job design. Job redesign is to make the same work more creative. Okay, I'm just changing the pattern and method of working. My objective is same. My outcome is, I want the same outcome. However, my objective being same, only my pattern is changing. Okay, I'm just going to share the screen. I think in the last session we started with job rotation, and then we had to stop because time got over. Now we'll just continue from there only. We started with this modern techniques of job design, and the first one was job rotation. Okay, I think for this was okay. Foster is trying to enter now. I'll take her in. Okay, so job rotation here, it is very beautifully said by Herzberg, that it is merely substituting one zero for another zero. Okay, that means jobs which are kind of a little similar. Okay, that can be rotated, right? For instance, a person working in marketing department with the PR team can work with the sales promotion team sometimes, can work with the publicity teams for sometimes, and vice versa, right? So this is job rotation. Department same hai, work more or less same hai. You're just shifting your roles. Okay, that is job rotation. We were about to start with the advantages. वो नहीं start किया था. Let us start with the advantages of job rotation. Okay, who is going to read this? Ma'am, can I? Anyone, you can start. Job rotations helps to avoid monopoly of job and enable the employee to learn new skills. Yes, the first advantage is, कौन मेरे को monopoly का meaning बताएगा? What do you mean by monopoly? Economics में आपको Ma'am, ये term सीखा single है? seller. Single seller. Yes. In economics, you refer it to as a single seller in the market, and nobody else is there, okay, to dominate him. So he is creating a monopoly. Simple example दूं, अगर आपके कॉलेज के बाहर एक ही पानी पूरी का स्टॉल है, ओके, मोनोपोली क्रिएट करेगा वो, क्योंकि पूरे लेन में कुछ और नहीं है, दूसरा शायद फूड आइटम भी नहीं बिक रहा है, एक अकेला ही वो फूड आइटम है और वो एक अकेला ही स्टॉल वहां पे है. So he can create a monopoly. Yes or no? He will charge whatever he wants to. Yes, ma'am. Compromise on the quality also for cost cutting or cost saving, right? We might do all that, and people will still buy क्योंकि option नहीं है ना? तो जब option नहीं होता है, yes, you call it as monopoly. You are doing something called, and जो monopoly create करता है ना, वो market को dominate करता है. Okay, he is doing something because there is no competitor in the nearby. Okay, so jobs में भी ना students ऐसा ही होता है. If you are sticking to the same role for a very long time, you are creating a monopoly. Okay, you are simply doing something which others won't get a chance to do, right?
So here you're creating a monopoly of the job, okay, which will eventually, you know, what will happen, जब तक आप हो company में आप कर पाएंगे, आपने वो छोड़ दिया वो job, how will the company then, you know, get another person who can understand this type of work? Yes or no, right? So आप job rotation करते हो ना, you can avoid job monopoly, okay, and this will help employees to learn new skills, because the employees now, you know, doing different job in job rotation, तो नया नया रोल कर करके employees के skills भी improvised होते हैं. I think extremely important that your employees should have, you know, different set of skills and should not be restricted only to one particular thing. I hope there is no difficulty in point number 1. Hmm. No, ma'am. Sure, easy to understand. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we have done this point number 1, which says that if I am encouraging job rotation, okay, automatically I am avoiding monopoly situation in my company. Okay, अगर कोई रोल फरहान बहुत टाइम से कंटिन्यूसली सेम रोल अकेले फरहान ही कर रहा है, किसी और को समझेगा ही नहीं वो काम कैसे करना है. He is master in doing that, but who has the guarantee that Farhan is going to be with the same company all the time long? He might leave the company. और उसने जॉब छोड़ दिया अचानक से, तो फिर who is going to perform that task, right? So job rotation will help me avoid this kind of situation, and it will help the employees also to learn new skills. Okay, then let us move on to the next point, that is, come on. Provides an opportunity to broaden one's knowledge by providing variety of work experience, thereby reducing burden and monotony. Okay, I am giving lot of opportunity to my employees, okay, by encouraging job rotation. This will help them to get knowledge of different work, okay, and उनको boredom, monotony, same काम रोज रोज करके, you know, जो एक boredom हो जाता है वो नहीं होगा, okay. So the first point is saying avoid monopoly, and second one is saying that job rotation will also help to reduce boredom and monotony. I hope I'm not going very fast, students. No, ma'am. ma'am. No, ma'am. आप लोग को समझ में आ रहा है? Sure. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. All right. मीन्स क्या होता है? Then I move on to point number 3. Ma'am. Preve- Ma'am, मुझे कुछ बोल रहा है. मुझे I'm sorry. What just happened? want to tell something. हाँ, मोनोटनी मीन्स क्या होता है मैम? Monotony मतलब सेम चीज जो आप रोज रोज करते हो ना, वो स्टेट ऑफ, वो पर्टिकुलर स्टेट को मोनोटनी बोलते हैं. बोलते हैं ना मोनोटोनस वर्क कल्चर. मोनोटोनस वर्क कल्चर मतलब आप सेम चीज रोज रोज कर रहे हो. अगर आप रोज रोज सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो भी मोनोटनी है. Okay, you should participate in different activities organized by college. नहीं तो फिर आपको क्या होगा, मोनोटनी होगा. मोनोटनी मीन्स सेम थिंग यू आर डूइंग एवरी डे. like boredom, a state of boredom. ये सेम चीज कर करके जब बोर हो जाते हैं ना, that's monotony. Okay, guys, I would really appreciate if you ask me doubts related to the subject. Huh? Please don't ask me doubts related to English words. Okay, you can find out very easily what you mean, and I don't think so. This is a new word, huh? This monotony word आपने पहले भी सुना होगा ना? Yes or no? यस मैम, यस सुना है मैम. Yes. 11th में ही सुना था मैम. 11th में क्या, स्कूल में भी आपने सुना होगा मोनोटनी. ओके, व्हाट डज यस यस मैम, मोनोटनी? इकोनॉमी में सुना था. जब आप सेम चीज रोज रोज करते हो, द स्टेट ऑफ माइंड, ओके, बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग एवरी डे, इज कॉल्ड एज मोनोटनी. I don't think so, students, it is advisable for me to waste my time in teaching you the English words. Okay, I understand आपको डाउट है, but would appreciate अगर आप सब्जेक्ट डाउट्स जरा ज्यादा पूछे. ये डाउट किसकी तरफ से आया था, बाय द वे? मॉड्यूल्स, आपके डाउट्स बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं हमेशा. All right, moving on to third point. Okay, who is going to read that? Ma'am, can I? हाँ, yes, continue.
prevents one from understanding the loopholes of a particular system, thereby keeping check on the fraudulent Fraudulent practices. Okay. fraudulent Uh, okay. Now listen to this very carefully, guys. Okay. अच्छा, अगर मैं है ना सेम काम रोज सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, ओके, और दूसरे एम्प्लॉयज नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता मेरे पास चांस है थोड़ा वो काम को क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना या फ्रॉड तरीके से वो काम करना? आई हैव दैट चांस ना, यस और नो, बिकॉज ओनली आई एम डूइंग इट, नोबडी एल्स इज डूइंग Yes, इट। ma'am. मैं दूसरा कोई भी एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, सिर्फ अकेले मैं ही वो काम कर, और किसी एम्प्लॉय को आता भी नहीं है वो काम करने के लिए। तो आई हैव चांस टू नो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। अच्छा, यही कल्चर अगर कंपनी का नहीं होता, अगर कंपनी अलाउ करती सारे एम्प्लॉयज को शिफ्ट करने अपना रोल्स, यानी कि जॉब रोटेशन, तो कभी कभार मेरा काम कौसर कर रही है, कौसर का काम फरहान कर रहा है, फरहान का काम आदित्य कर रहा है, आदित्य का काम सरिता कर रही है। तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का काम जब कर रहे हैं ना, तो हमें चांस नहीं है ऐसा कुछ फ्रॉड तरीके से काम करने का, बिकॉज वी हैव अ चेक ऑन हाउ द अदर पर्सन इज डूइंग इट, राइट? लूप होल्स भी मालूम पड़ जाएगा। बिफोर यू आस्क मी, लेट मी ओनली टेल यू द मीनिंग ऑफ लूप होल्स, कमियां। ओके, उस काम करने को, वो पर्टिकुलर सिस्टम होता है ना किसी काम को परफॉर्म करने का, तो वो सिस्टम में क्या कमियां है मुझे वो भी मालूम पड़ेगा। ओके, इन फैक्ट जॉब रोटेशन का, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन हियर, मेरे नजरिए से सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? अगर जॉब रोटेशन हो रहा है ना, आई विल अंडरस्टैंड वो पर्टिकुलर काम जो फरहान कर रहा है उससे बेहतरीन तरीके से शायद मुझे आ रहा है करने, ओके, और जो काम मैं कर रही हूँ उससे बेहतरीन तरीके से फरहान कर सकता है। ओके, so job rotation में you will also come to know who is going to be the best fit at which place. Okay, so third advantage of job rotation is I will understand the loopholes of the system and I can have a check on fraudulent practices. Okay, अगर कोई भी fraud तरीके से काम कर रहा है वो पकड़ा जाएगा। For example सेल्स का ही ले लेते हैं, ठीक है? अभी मैं जब सेल्स करती हूँ, टेलीफोनिक सेल्स, ओके, चांसेस आर मैं थोड़ा फ्रॉड तरीके से कर रही हूँ, कस्टमर को है ना बहुत टॉल क्लेम्स, ओके, कुछ भी झूठे सपने दिखाकर, ओके, मैं सेल्स कर रही हूँ और मेरा सेल्स दिन में 50 यूनिट हो रहा है। अब कल मेरे ही जॉब पे फरहान ने वर्क किया एंड नाउ ही इज डूइंग माय वर्क। अच्छा, वो कितना भी अच्छे से काम कर रहा है, कितने भी इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, फिर भी दिन में उसका 30 सेल्स हुआ सिर्फ। ओके, परसों के दिन कौसर ने वो काम लिया, ओके, कौसर भी वैसे ही बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन कर रही है, बहुत अच्छे से कस्टमर को एक्सप्लेन कर रही है माइन्यूटली, फिर भी कौसर का सिर्फ 30 सेल्स ही हुआ है। डोंट यू थिंक फरहान एंड कौसर विल नाउ डिस्कस ऐसा कैसा, ये रिशिता मैम जब सेल्स कर रही है तो 50 हो रहा है, हम कर रहे हैं तो 30 हो रहा है? Don't you think those two are going to discuss? Yes, ma'am. Yes, or ma'am. no? Yes, ma'am. You can also Automatically, yes, automatically the fraudulent practices, if any employee is doing, it will be revealed. Okay, moving on to the next point, if there is no doubt. Can I request Mehak to read? She is very loud and very clear. Mehak, can you take over, please? Yes, ma'am. Yeah. Trains the employees for different kind of tasks that increase their adaptability and flexibility in the organization. I think superb. This is a brilliant advantage. Okay, if I am, training my employees and doing something called job rotation, they become very flexible. Flexible समझते हो ना, rigid नहीं होना, एक ही काम एक ही जगह पे stick नहीं रहना. Okay, so that is flexibility. And my employees are going to be very flexible in their approach. I think job rotations and students, you can also change the mindset of your employees. Okay? Sometimes the employees might have, they might assume, which cannot be factual, just a perspective. वो शायद ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है,
ऐसा एम्प्लॉय जो सोच रहा है हो सकता है उसकी गलतफहमी है. ओके, जब वो किसी और का रोल परफॉर्म करेगा, when he is entering into the shoes of another employee, he will understand what the other employee is contributing. Correct now students, yes or no? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So automatically this is going to make the employees feel that any success of the company or any positive outcome of when it comes to the work is because the work was shared by everyone and the credit goes to everyone. Okay, employees will become more flexible in their approach. Okay, and the last advantage is, come on. It prepares employees for future leadership positions. Okay, very nice. So at the end of the day, the employee is, since he is now having varied skills, different set of skills, might be, and if he is able to adjust in different roles, okay, he might be very suitable to, become a leader in the organization in future. He can become a team leader, he can become a manager, he can become an operational manager, he can take up those roles because now he is quite adaptable to all the different roles that he has performed. Any difficulty, students? No, ma'am. No, ma'am. No, Sure, ma'am. easy to understand. Yes, Sure, ma'am. easy. Okay, Yes. all right. Now, सर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बार बार आप आउट एंड इन हो रहे हो? Okay. All right. Very quickly, you all are going to tell me the advantages. First advantage क्या है student? Because of job rotation, okay, company can avoid. Come on. Monopoly Okay. of job. Yes. Yes. Very nice. Company can avoid monopoly of job, and at the same time will help employees to learn New new skills. skills. Right. Okay, I'm sorry guys. There's a call that was coming. मेरा आवाज break हुआ क्या? No, ma'am. No, ma'am. All right. Moving on to the second point. If I am encouraging job rotation, okay, automatically I can avoid something called as, just a moment, boredom and, come on, Monotony. yes, I can avoid something called as boredom and monotony, right? Then my third advantage is I can have a check on, come on, Fraudulent. fraudulent practices. Yes or no? I can have a constant check on fraudulent practices, and also I will be able to understand the Loopholes. yes, very good. I will be able to understand the loopholes of the system. Okay, and then next point that we have seen is it is going to make the employee very, come on, Flexible. yes. And lastly, the employee can take up the leadership. Leadership I role. hope there is no difficulty here. No, ma'am. I think I'm going very slow and I need to take up the speed because recruitment and selection is very vast. Okay. Next time when I ask you the questions, please be prepared. We have seen this 5 major advantages of job rotation. Okay. I'm going to share this file with you, maybe in the Google Classroom. All right. And you can have an access to the notes and be prepared when you come for the next lecture. Let us understand disadvantages of job rotation. We have seen that, by doing this, by encouraging this culture of job rotation, we can, enjoy so many advantages. However, every system student has certain disadvantage. Okay? हर एक point का दो पहलू होता है ना, हर एक सिक्के का एक, if there is a heads, there is a tail also. So let us understand what can be the other side
of job rotation. Okay, Mehak, point number 1. The shift from one job to another may lead to frequent interruptions, thereby affecting the smooth flow of work. Naturally, if job rotation is done very frequently, I think it should be planned. Okay, ऐसा frequently नहीं होना चाहिए. If it is happening very frequently, it is going to interrupt, I think, the normal working, and which will affect the flow of work, right? So because for example, मैंने अगर आज काम प्रोजेक्ट को आज हाथ में लिया है, और मुझे 2-3 दिन लग रहा है प्रोजेक्ट समझने में, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ओके, तो 3-4 दिन के बाद में मैं शायद उस प्रोजेक्ट को अच्छे से डेवलप कर पा रही थी, लेकिन 3-4 दिन बाद कौसर के हाथ में चला गया वो प्रोजेक्ट. ओके, तो विच मीन्स ओके, मेरे को वाइजली उतना वक्त मिला नहीं उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए. yes or no? So complete this shifting of role from one to another, it should be done very wisely. ओके, सूझबूझ करके करनी चाहिए, अच्छे से प्लानिंग होना चाहिए, सही से एनालिसिस करके फिर करना चाहिए. बहुत फ्रीक्वेंटली करोगे तो नॉर्मल वर्किंग क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा. करेक्ट ना स्टूडेंट्स, यू अग्री टू दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And can you explain this point again? Okay, I'll explain this point again. For example, okay, this company believes in job rotation, which is a very good thing, but it is not doing a planned job rotation. Plan समझते हो ना, planning करके, अच्छे से सोच समझ के, okay, and it is constantly and frequently, asking the employees to change their roles. तो मेरा जो role आज था, okay, today I'm working, and then after 2-3 days, somebody else is taking that role. Okay, इससे क्या होगा, 2-3 दिन मैंने जो मेहनत की है ना उस प्रोजेक्ट पे, वो वेस्ट हो जाएगा. इट इज गोइंग टू समवन एल्स देन. ओके, सी शिफ्ट, कांस्टेंट शिफ्टिंग, और वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए. ओके, प्लान्ड होना चाहिए. ऑलराइट, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब रोटेशन कर रहे हो, तो एक नॉर्मल वर्किंग जो होता है ना, वो इंटरप्ट होने वाला है. आई वॉज जस्ट अबाउट टू गेट रिजल्ट टू दैट प्रोजेक्ट. मैं बस पहुंच ही रही थी उस प्रोजेक्ट के रिजल्ट तक, लेकिन फिर वो जॉब रोटेशन में फिर वो किसी और के हाथ में चला गया. ओके, तो उससे क्या होगा, नॉर्मल वर्किंग अफेक्ट होगा. आई थिंक करो जॉब रोटेशन, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी. हाउएवर, प्लान करके करो कि आज मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, मुझे थोड़े दिन तक वो काम करने दो. ओके, फिर उसके बाद में आप वो शिफ्ट करो किसी और को. ओके, फिर किसी और का काम मुझे दो. यू कैन डू लाइक दिस, लेकिन 2-3 दिन में, एक हफ्ते में अगर शिफ्टिंग हो रहा है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग, एंड कंपनी माइट नॉट गेट गुड रिजल्ट्स. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू. किसका डाउट था वो? Yes, ma'am. Yeah, all right. Moving on to the second point. All right, Mehak. When new job holders are rotated from one department to other, not only additional time is required to perform the job, but also the quality of work is affected as the probability of making mistakes is increases. Okay, I'll just explain you this point. Before I explain you, हर एक डिसएडवांटेज का सोल्यूशन भी होना चाहिए, है ना. तो पहला डिसएडवांटेज क्या था, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो वो फ्रीक्वेंटली नहीं होके प्लानिंग करके करो, राइट. अब सेकंड डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है कि आप जब ना जॉब रोटेशन करते हो, तो वन एम्प्लॉय इज टेकिंग अप द रोल ऑफ अनदर एम्प्लॉय. तो मुझे क्योंकि मालूम नहीं कि कौसर का काम एग्जैक्टली कौसर कैसे करती है और मुझे कैसे करना चाहिए, ओके, हो सकता है मुझसे मिस्टेक्स हो. अच्छा, मिस्टेक्स ये क्रिएटिविटी के चक्कर में, ये बोर्डम ना हो उस चक्कर में अगर जॉब रोटेशन हो रहा है, ओके, तो ट्रेनिंग के साथ करना चाहिए. सेकंड डिसएडवांटेज का सोल्यूशन क्या है, पहले सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो. ओके, सिंपली मेरे को बोलो मत कि कौसर का काम करने के लिए. सिंपली मुझे बोल देंगे आई शुड डू द वर्क ऑफ कौसर एंड कौसर विल डू द वर्क ऑफ समवन एल्स. इससे क्या होगा, हमारे मिस्टेक्स ज्यादा होंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके, आप स्पेशलाइज्ड हो, आप स्मार्ट हो, आप मास्टर हो आपके काम में. कोई और जब ये कर रहा है ना आपका काम, ओके, वो आपका बेंचमार्किंग नहीं अचीव कर पाएगा. जिस तरीके से जो आप स्टैंडर्ड से काम करते हो वो अचीव नहीं कर सकता. तो उससे मिस्टेक्स भी नहीं होना चाहिए. yes or no? So you should give necessary training to all the employees before encouraging job
रोटेशन. पहले तो सारे एम्प्लॉयज को पूरा काम सिखा दो, उसके बाद में जॉब रोटेशन बताओ. आई होप इजी टू अंडरस्टैंड. Yes, ma'am. Yes, Oh. ma'am. Moving on to the third and last point, very quickly we will complete this because there's hardly a minute left for the session to get over. Okay, disadvantage. It may lead to feelings of misunderstanding as employees may feel that they are purposefully given extra work, which leads to feelings of disharmony and discontent. Okay, if you are doing job rotation, my third problem or the third disadvantage, uska solution kya hai? Please have communication with your employees. Inform them the purpose of doing job rotation. अगर आप उनको inform नहीं करेंगे कि आपका purpose क्या है, employee को क्या लगेगा पता है कि क्या है, why are you asking me today to do the job of someone else? Okay, ये what is this going on? I am not hired for this. हो सकता है ना employee ऐसा बोले, you hired me for advertising, now you are asking me to do sales. Okay, you hired me for sales, now you are asking me to do PR. Okay, इससे होगा क्या, एम्प्लॉयज के बीच में डिस्कंटेंट मतलब दे आर नॉट हैप्पी. ओके, and there will be no peace. Disharmony yani peace. I hope Moji is unable to give you the meaning of disharmony and discontent. Discontent का meaning क्या है? That unhappiness. Okay, the employee is unhappy. All right. And disharmony यानी peace में नहीं है. Peace समझते हो ना, शांति, right? वो नहीं होगा क्योंकि मैं शायद मेरा ही काम बेहतरीन तरीके से कर सकती हूँ, मुझे दूसरों का रोल उतना सही से निभाने आएगा नहीं. आई माइट नॉट बी एबल टू जस्टिफाई द रोल ऑफ समबडी एल्स. ओके, सो आई विल फील दैट यू नो व्हाई कंपनी इज डूइंग दिस. ओके, देयर इज नो नीड टू. मैं शायद हो सकता है मैं बोर नहीं होती हूँ रोज रोज सेम काम करते करते. ओके, आई डोंट नीड दिस job rotation. I'm master in accounts, I'll only do accounts. Okay, I'm not able to do something else. Okay, so these are certain disadvantages of job rotation. First one is it leads to frequent interruption. Second one is it is going to make employees commit many mistakes. And then the third one is employees might feel discontent and there would be a disharmony. I hope there is no difficulty till here, students. No, ma'am. No, ma'am. All right. No, So ma'am. this was job No, rotation. ma'am. Okay, thank you so much for your replies. So today we have seen job rotation meaning and advantages as well as disadvantages. In the next session, I will complete job enrichment, and then we have one more modern technique. I'll cover that also. Stopping the screen share over here. If there is any difficulty, students, you can get back to me. Okay, guys, then you all have a nice day ahead. Was very nice meeting you here. You take care of yourself, and anything that you did not understood, please get back to me. All right. Yes, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. Welcome. Have a nice day. Bye. Thank you, Have a ma'am. nice day. मैम Welcome. कॉलेज चालू होगा कुछ पता चला क्या? ये किसका डाउट था? मतलब मैं शुभम था. ओके, जिस दिन हमें पता चलेगा कि कोरोना कब कंप्लीटली खत्म हो गया है, कब सबके सब प्रॉपर वैक्सीनेटेड हो गए हैं, आई डोंट थिंक सो कॉलेज विल स्टार्ट दैट सून, बट वी हैव टू वेट